हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 MCQs फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग विच विल हेल्प अस इन प्रिपरेशन ऑफ UGC नेट कॉमर्स एग्जाम। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ऑप्शंस हमारे पास हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और प्रीपेड एक्सपेंसेस। करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी, दैट इज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या होता है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट वो अकाउंट होता है, सिंपली जनरल लेजर अकाउंट है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है एंड इट रिड्यूसेस द डेबिट बैलेंस ऑफ रिलेटेड एसेट अकाउंट। जैसे कि यहां पर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। इसका बैलेंस क्रेडिट में होता है एंड इट रिड्यूसेस the debit balance of related asset account. For example, ये accumulated depreciation account है मशीनरी का. So this balance, this credit balance will reduce the debit balance of machinery. Correct answer option C, that is accumulated depreciation. Next question, calculate break-even point in units if selling price is rupees 50 per unit, variable cost rupees 20 per unit and fixed cost amounts to rupees 30,000. Options हमें given है यहाँ पर 500, 600, 1000 and 1200 units. So simple formula होता है to calculate break-even point in units. The formula is fixed cost by contribution per unit. Fixed cost हमें यहाँ पर given है 30,000 rupees. So पहले we will write that. डिनोमिनेटर में वी नीड टू हैव कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट वो हमें गिवन नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट द सेम बाय सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 50 माइनस 20 कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है 30 रुपीज पर यूनिट। नाउ वी नीड टू सॉल्व इट फर्दर। We get break even point in units as 1000 units. So correct answer is option C, that is 1000 units. Next question, the matching principle matches options हैं assets with liabilities, revenues with expenses, debits with credits और sales with purchases. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है वी नीड टू मैच रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस सो दैट वी कैन इंश्योर करेक्ट प्रॉफिट मेजरमेंट। Which accounting concept assumes that the business will continue indefinitely? Options हैं conservatism, going concern, consistency और realization. Correct answer option B, that is going concern. In accounting, deferred revenue expenditure refers to options हमारे पास हैं capital expenditure, revenue expenditure of future years, revenue expenditure with long-term benefits, expenditure on intangible assets. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। ऑप्शंस हमें गिवन है इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, cost of dismantling and restoring the site और general administrative overheads. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये इंक्लूड नहीं किए जाएंगे इन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अगला क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इज क्लासिफाइड अंडर। ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और नन। सो इशू ऑफ शेयर्स मीन्स रेजिंग न्यू कैपिटल, so that means it comes under financing inflow. Correct answer option C, financing activities. When depreciation is charged, which accounts are affected? Options हैं asset and profit and loss accounts, option B asset and liability account, option C income and expense account, option D liability and capital. Correct answer option A, that is asset and profit and loss account. Asset account impact होता है because asset की value reduce होती है. Profit and loss account is used to show the expense. So asset and profit and loss account impact होते हैं whenever depreciation is charged. A machine costs rupees 1 lakh, residual value मतलब कि scrap value 10,000, life is 5 years,
फाइंड एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. सो स्ट्रेट लाइन मेथड हमें यहाँ यूज करना है टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी, ऑप्शंस हमें गिवन है 10,000, 18,000, 20,000 और 25,000. सो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 लाख इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि है 10,000, and we need to divide it by the life of the asset, which is 5. So 1 lakh minus 10,000 is 90,000. 90,000 by 5 is option B, that is 18,000. So option B, that is 18,000, will be the annual depreciation. Under double entry system, every transaction affects at least, options हैं 1 account, 2 accounts, 3 accounts or none. Correct answer option B, that is 2 accounts, because under double entry system each transaction has a dual aspect. एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है. सो दैट मीन्स एटलीस्ट 2 अकाउंट हमारे पास होने चाहिए. 2 अकाउंट्स आपके इम्पैक्ट हमेशा होंगे. 1 विल बी डेबिटेड, 1 विल बी क्रेडिटेड. इससे ज्यादा अकाउंट्स भी हो सकते हैं. वी कैन हैव 2 एज डेबिट एंड 1 एज क्रेडिट. सो बेसिकली टोटल वैल्यू है डेबिट एंड क्रेडिट की, दैट शुड बी सेम. और इस केस में व्हेन यू हैव 2 डेबिट and 1 credit, this type of entry is known as compound entry. Goods worth rupees 50,000 sold at 20% profit on cost. Find the selling price. Options हमें given है 55,000, 60,000, 72,000 और 80,000. So 50,000 cost है, cost का 20% आपका profit है. So 50,000 का 20% होता है 10,000 rupees. 50,000 plus 10,000 will be your selling price. That is equal to option B, 60,000 rupees. So option B, that is 60,000, is the correct answer here. Opening capital rupees 80,000, closing capital rupees 1,20,000, drawings rupees 20,000, and we have to find out the profit. So profit हम कैसे निकालेंगे? We will take closing capital, which is 1,20,000, minus opening capital, that is 80,000. You will get 1,20,000 minus 80,000 will be 40,000, right? So 40,000 आपके पास आ जाता है when you subtract opening capital from closing capital. इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप drawings को add करेंगे. 40 plus 20,000 is equal to your amount of profit, that is option C, 60,000 rupees. Calculate PV ratio if sales is 10 lakh rupees and variable cost is 6 lakh rupees. So simple formula होता है PV ratio का, that is contribution by sales into 100. So contribution यहाँ पर आपको given नहीं है, but आप उसे calculate कर सकते हैं. Contribution कैसे calculate करते हैं? Sales minus variable cost. So 10 lakh minus 6 lakh is 4 lakh. 4 lakh आपका हो जाता है contribution by sales amount, which is 10 lakh. Into 100 you will get your PV ratio. So 4 by 10 into 100. So यहाँ हम 0 से 0 cancel कर देते हैं. 4 into 10, that is 40% will be your PV ratio. So correct answer is option A. Double entry system was first introduced by, option B is the correct answer here. The degree of operating leverage measures, options are sensitivity of EBIT to sales, sensitivity of EPS to EBIT, sensitivity of sales to cost, or none of the above. So degree of operating leverage measure करता है option A, that is sensitivity of EBIT to sales. When debentures are issued at a discount and redeemable at premium, the loss is treated as, options हैं revenue expenditure, deferred revenue expenditure, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. सो जब भी ऐसा केस होता है जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे और रिडीमेबल होते हैं एट प्रीमियम, द लॉस इज ट्रीटेड एज ऑप्शन बी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इक्विवेलेंट? ऑप्शंस हैं ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट फॉर 3 months, अकाउंट्स रिसीवेबल और कमर्शियल पेपर्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल. Accounting Standard 2 relates to, options are depreciation accounting, valuation of inventories, contingent liabilities or revenue recognition,
करेक्ट आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 relates to option B, that is valuation of inventories, and you should be knowing accounting standards for these items as well. अगेन वी हैव अ क्वेश्चन जहां पर हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नेट के एग्जाम में आते हैं, सो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ देम. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20, selling price per unit 40 rupees, and we have to calculate break even point in units. So formula हम already discuss कर चुके हैं, that is fixed cost by contribution per unit. So fixed cost यहाँ पर given है आपको 1 लाख रुपीज. अगेन इस क्वेश्चन में भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन नहीं है, बट हम सिंपल फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड सिंपल फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सो 40 माइनस 20 इट इज 20. कैंसिल करते हैं. वी गेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज 5000 यूनिट्स, जो कि है हमारा ऑप्शन सी. So option C, that is 5000 units here, is the correct answer. Discount allowed is options हैं expense, income, asset और liability. Discount allowed क्या होता है? Discount allowed is an expense. Option A, expense, is the correct answer here. In this question, we have been given working capital rupees 1,50,000, current ratio 2:1, and we have to find current assets. Options हमें given है 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh और 75,000 rupees. So क्योंकि यहाँ पर हमें working capital given है and we have been given current ratio as well, we can easily find out current assets. So see, current ratio का formula क्या होता है? Current assets by current liabilities, right? Current ratio हमें given है यहाँ पर 2:1. So we can assume current assets to be 2x, current liabilities to be 1x. Working capital is current asset minus current liabilities. Current assets में से जब हम current liabilities को minus करते हैं, we get working capital, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 रुपीज. So current assets हमारे पास हैं 2x and current liabilities x is equal to working capital 1,50,000. राइट. सो 1,50,000 हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है. सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि 2x माइनस x विल बी x, x इज इक्वल टू 1,50,000 और x क्या है हमारा? x है करंट लाइबिलिटीज. सो अगर x की वैल्यू हो जाती है 1,50,000, सो दैट मीन्स 2x जो कि है करंट एसेट्स विल बी 2 into 1,50,000, that is 3 lakh. Option B, 3 lakh rupees is the value of current assets. Prepaid expenses are shown as options are current assets, current liabilities, non-current assets or contingent assets. Correct answer option A, that is current assets. Outstanding expenses are options are liability, asset, expense or income. Outstanding expenses आपकी होती है option A, that is liability. Cash sales 60,000 rupees, credit sales 90,000 rupees, sales return is 10,000 rupees. We have to find out net sales. So net sales आप कैसे find out करेंगे? You will take cash sales plus credit sales. ये हो जाएंगे कंपनी के टोटल सेल्स. टोटल सेल कितना हुआ? 60,000 plus 90,000, that is 1,50,000. उसमें से आप लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, that is 10,000 rupees, and your net sales will be 1,40,000 rupees. Option B, 1,40,000 will be the correct answer here. Cost of goods sold rupees 4 lakh. Gross profit is 25% on cost, and we have to find out the amount of sales. Options हमें यहाँ पर given है 3 lakh rupees, 4 lakh rupees, 5 lakh rupees और 6 lakh rupees. So cost of goods sold आपका है 4 lakh, उसका 25% will be your profit. So 4 lakh plus 25% on 4 lakh कितना होगा? 1 lakh rupees. 4 lakh plus 1 lakh will be your sales amount, that is equal to option C, 5 lakh rupees. In inflationary periods, FIFO method gives, FIFO method means first in, first out. Options हैं lower profit, higher profit, no change और loss. Correct answer होगा option B, that is higher profit, because older लोअर कॉस्ट जो आइटम्स होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशनरी पीरियड्स की जिसमें प्राइसेस बढ़ते जाते हैं. सो व्हेन वी आर यूजिंग फीफो मेथड, दैट मीन्स पुराने खरीदे हुए आइटम्स, ओल्डर आइटम्स विच वर लेस इन कॉस्ट आर बीइंग सोल्ड first. So that means higher profit will be experienced.
In absorption costing, fixed overheads are charged to options हैं cost of goods sold only, period cost only, each unit of output or prime cost. Correct answer each unit of output. In absorption costing, fixed overhead charge किया जाता है to each and every unit of the output. Income received in advance is shown as options are asset, liability, expense or reserve. Correct answer option B, that is liability. Fixed cost rupees 40,000, PV ratio 25%. We have to find out break-even sales. Options हैं 1 lakh, 1,60,000, 3 lakh or 3,20,000. Formula for break-even sales is fixed cost by PV ratio. So fixed cost हमें given है 40,000 and PV ratio is 25%, or we can say 0.25. So when you take fixed cost, that is 40,000, and divide it with 0.25, you will get break-even sales, which will be equal to option B, 1,60,000. Which of the following is not a cash flow from operating activities? यहाँ पर बात हो रही है cash flow statement की. Options हमें given है dividend paid, interest paid, income tax paid और cash received from customers. Correct answer है option A, that is dividend paid. It is not a cash flow from operating activities. कौन से head के अंदर ये आता है? Tell me in the comment section. Audit working papers are the property of options हैं client, auditor, company or shareholders. Correct answer option B, auditor. Internal audit is conducted by options हैं external auditor, management's own staff, government or chartered accountant. Correct answer option B, internal audit is conducted by management's own staff. Verification means checking vouchers, checking existence and ownership of assets, reviewing entries or checking the total. So verification का मतलब होता है checking existence and ownership of assets. That means option B. Audit sampling means options are checking all the transactions, ignoring small transactions, checking few items to draw conclusions or none. So audit sampling का मतलब होता है checking only a few items to draw conclusion. That is option C. The main objective of audit is it detection of fraud, expression of opinion, compliance with law or preparation of accounts? Correct answer option B, expression of opinion. Who appoints the first auditor of a company? Options are shareholders, board of directors, government or registrar. Correct answer option B, that is board of directors, and it should be done within a time period of 30 days from the date of incorporation. Vouching means options are checking arithmetical accuracy, checking authenticity of transactions, verifying the totals or none. Correct answer option B, checking authenticity of transactions. Which audit is mandatory under Companies Act 2013? Options हैं cost audit, statutory audit, internal audit or management audit. Correct answer option B, statutory audit. Audit of cooperative societies is conducted by options हैं government auditor, internal auditor, chartered accountant or registrar of societies. Correct answer है option D, which is registrar of societies. Internal control means control by auditor, management, government or shareholders. Internal control का मतलब होता है option B, that is control by the management. Audit report is addressed to options हैं management, employees, company secretary or shareholders. Correct answer is option D, that is shareholders. Continuous audit is suitable for options हमारे पास हैं small firms, big concerns, partnership firms or none. Correct answer obviously is option B, big concerns, because big concerns have a high number of transactions and they need to have continuous audit. Surprise checks are mainly used in internal audit, statutory audit, cost audit or management audit. So surprise checks are mainly used in internal audit, that is option A. Audit notebook is maintained by client, auditor, accountant or director. Correct answer है option B, that is auditor, and audit notebook is maintained by the auditor. Goodwill is recorded in the books only when options are it is internally generated, it is purchased for consideration, it increases in value over time, or it is self-assessed by the management.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इट इज परचेज्ड फॉर कंसिडरेशन. As per Accounting Standard 26, goodwill is recorded in the books only when it is purchased for the consideration. So correct answer option B. Auditing Standard SA 700 relates to options हैं audit planning, audit report, evidence और fraud detection. Correct answer option B, that is audit report. Statutory auditor of a company is appointed under section options हैं 139, 143, 147 or 145. Correct answer option A, that is 139. It is section 139 under Companies Act 2013. Cash in hand rupees 5,000, petty cash 1,000 rupees, cash at bank 9,000 rupees, and we have to find total cash balance for audit. So correct answer यहाँ पर होगा option C, that is 15,000 rupees. That will be a total of all these numbers. That means 5,000 cash in hand plus 1,000 petty cash plus cash at bank 9,000 rupees. Management audit focuses on options हैं financial statements, efficiency and effectiveness, cost records or cash receipts. Correct answer option B, that is efficiency and effectiveness. Last question for today's video. Which one is an example of continuous audit technique? Options हैं surprise check, interim audit, test checking or routine audit. Correct answer यहाँ पर है option A, that is surprise check. So that was all for today's video. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel Concepts of Commerce. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.